लोग कहाँ हैं? They're in Ukraine. वो यूक्रेन They're fighting the Nazis. नाज़ी से लड़ाई कर रहे हैं। Nazis are very envious, नाज़ी बहुत द्वेषी होते हैं, atheistic, नास्तिक, and they very only want to bring death and destruction. और केवल विनाश और लोगों की हत्या करना It's चाहते हैं। the nature of terrorists, ये है आतंकवादी का स्वभाव, atheists, नास्तिक, right? Very envious people. बहुत ही द्वेषी व्यक्ति होते हैं। So they deserve to be destroyed, isn't it? तो उनको उनका विनाश होना जरूरी है। We're going to talk about that. Are you a Nazi? इसका मतलब आप नाज़ी हैं? Be careful, man. Be सावधान हो careful. जाइए, सावधान हो जाइए। God Nishringadev. भगवान कृष्ण, Shall we chant and be happy? क्या हमें कीर्तन करना और खुश होना चाहिए? Are you awake? आप लोग जगे हुए हैं? Let's chant. चलिए हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। Shri Shri Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki, Srila Veda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanand, Srila Bhagavan ki. Namo Vishnu Padaya Krishna Petaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nityanamine.
की श्री गो गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की समवेद भक्त वृंद की गौर कमल हरि हरि बोल हरे कृष्ण. Ambarisha, welcome. अम्बरीश आपका स्वागत है. Lord Nrsimhadev, mercy today. नृसिंहदेव की कृपा है आज. Very nice. बहुत अच्छा. So, you want to chant Nrsimhadev prayer now or after? आप नृसिंहदेव की प्रार्थना अभी करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं? Now? He wants now. आप ये अभी करना चाहते हैं. Okay. Whatever Enrico wants, he gets it. जो भी एनरिको चाहते हैं And our friend, whatever they want, they get it. हमारे जो दोस्त हैं वो जो चाहते हैं Custom made, custom made. We want to make everybody happy. ये कस्टम मेड है. हम सभी को खुश करना चाहते हैं. So, how's your consciousness? आपकी चेतना कैसी है? Why don't you chant? आप क्यों नहीं कीर्तन करते? Let's say you're chanting. चलिए देखते हैं आपका कीर्तन. You remember the prayer, right? नृसिंहदेव भगवान की नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते
की So many things to talk about. बहुत सारी बातें हैं करने के But लिए। I found very interesting discussion about Lord Narasimha from Srila Prabhupada's books and teachings. श्रील प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं से नरसिम्हा देव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे चीजें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज And it's also relating a little bit to what we've been talking about our scorpion analogy last night, right? पिछली रात जो है हम बिच्छू वाली जो उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे वो उससे बहुत ज्यादा संबंधित भी So है। it's a very fitting conclusion to all sides of that story. तो बहुत ही सही निष्कर्ष सभी कहानियों के And some तरफ से निकलता है clarification comes onto that story as well. और साथ ही साथ उस कहानी में कुछ और स्पष्टीकरण भी मिलेगा। Because such a demon as Hiranyakashipu is a greatly atheistic and a demoniac personality. क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे असुर बहुत ही बड़े आसुरिक प्रवृत्ति के नास्तिक व्यक्ति हैं। Like worse than so many scorpions. बहुत सारे बिच्छुओं से कहीं ज्यादा Terrorizing, biting, hurting, killing everybody. आतंक फैला रहे हैं, डंक मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। Even he wants to kill his own child, his own son, खुद के बच्चे को भी वो मारना चाहते थे। 5-year-old boy, 5 साल के बच्चे को। because he was so envious of Krishna. कि वो कृष्णा से इतना द्वेष करते थे। Therefore, this envy is like a burning inside of them, like a great poison. तो ये ईर्ष्या उनके अंदर जल रहा था। And it completely overtake them to the point that they become envious even of their own self. और यहाँ तक कि ये द्वेष इतना ज़्यादा बढ़ गई खुद से भी उनको ये द्वेष What to speak of the other living entities. दूसरे जीवात्माओं के प्रति क्या कहना। So even they want to kill his own child. यहाँ तक कि वो खुद के बच्चे को मारना चाहते थे। You see, so I was thinking that in India it's very difficult for Indian body devotee to be devotee because the parents are more like demons. और क्योंकि देखा है भारत में जो है भारतीय जिनको शरीर प्राप्त हुआ है उनके बच्चों के लिए भक्त बनना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनके माता पिता असुर के जैसे हैं। Let's be honest. ईमानदारी से कहूँ तो। Okay, when Prabhupada was talking about that, he said, you see, they don't believe in God. They say they believe in God. और प्रभुपाद कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं इनको भगवान में विश्वास है। Because you're supposed to say you believe in God. क्योंकि ये कहना पड़ता है कि And भगवान में because विश्वास है। they're trying to look like they're pious people. और वो दिखने का प्रयास करते हैं कि वो पुण्य काम Who करते can हैं। say they don't, especially in India, who can say they don't believe in God? विशेष करके भारत में कौन ऐसा कहेगा कि मुझे भगवान में So विश्वास they है। have to say, तो उन्हें बोलना पड़ता है। but then Prabhupada says, but then God has no face, He has no hands, no legs, He has no personality, right? So this is offensive mentality. तो अली प्रभुपाद बताते हैं वो ऐसा मानते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये एक तरह का आपराधिक मानसिकता So है। he's saying that if you're saying that God is not a person, He doesn't have a spiritual body and a face and hands and legs, then you don't believe in God actually. तो असल में आप मानते नहीं कि भगवान का कोई रूप है, उनका चेहरा है, उनके सारे अन्य चीजें मौजूद हैं। तो असल में भगवान में Envious विश्वास of God. यानी कि भगवान से आप द्वेष करते हैं। Right? Prabhupada said you're great rascals. तो बात कहते हैं आप बहुत बड़े बदमाश लोग हैं। So they really don't really believe in God. असल में वो लोग असल में भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। And so that means they have a demoniac, envious nature. यानी कि उनका आसुरिक और द्वेष रवैया है। And so even they go against their own sons or daughter who want to be devotee. और यहाँ तक कि वो खुद के बेटे बेटियों के खिलाफ भी जाते हैं जो भक्त बनना चाहते हैं। May even come to the point that Prabhupada is talking about how they hire some people to pick up the children to free them from the brainwashing. और प्रभुपाद ये भी उदाहरण बताते हैं कि वो कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनको ब्रेन वॉशिंग ना कराया To जा सके। deprogram them. उनको वापस से सही Prabhupada said they're calling it the brainwashing. प्रभुपाद कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। The Prabhupada said in actuality it's brain giving. प्रभुपाद बताते हैं कि हम उनको दिमाग दे रहे हैं Because these people, they don't have any brain. क्योंकि इन लोगों के पास कोई दिमाग नहीं है So they cannot think about what and who is God. तो वो सोच नहीं पाते हैं असल में कौन है क्या है भगवान। So even they can kill you, यहाँ तक कि वो लोग आपको they मार भी can सकते throw हैं। you in, lock you in the house. Were they locking you in the room? आपको कमरे के अंदर बंद करके रखें क्या वो आपको कमरे के अंदर बंद करके रखते Did थे they put a padlock on there? और उसमें ताला लगा कर रखते थे। And not allow him to go to the temple? आपको मंदिर हम जाने नहीं देंगे। Did they try to kill you by Yeah, alright. sending some elephants to stomp on you? तो क्या उन्होंने आपको मारने के लिए कुछ हाथी भेजे ताकि हाथी आपको हाथी पर चढ़ कर आपको मारे। They didn't hire him, give him some rupees to come over and stomp on you? इन्होंने उनको कुछ पैसे देके लगाया नहीं आपके ऊपर चढ़ने के लिए ताकि आपको मार सके। But if they are manipulating and they are
trying to stop you from being devotee, then they're demon. तो वो आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के भक्त बनने से, इसका मतलब वो असुर है, They're acting like atheistic demon. वो नास्तिक असुर की तरह व्यवहार कर So रहे they हैं। may not try to kill your body, तो हो सकता है आपके शरीर को मारने का प्रयास नहीं कर रहे हो, but they're trying to kill your soul. लेकिन आपकी आत्मा को मारने का प्रयास कर रहे हैं। But even the father Hari-katha trying to kill Prahlad Maharaj. तो यहाँ तक कि यहाँ पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को मारना चाहते थे, But because he had so much strength in his bhakti, in his loving devotion, लेकिन उनकी भक्ति में, प्रेम भक्ति में इतनी शक्ति थी, then the father he was getting frustrated because he couldn't kill Prahlad. तो पिता को बहुत हताशा होने लगी क्योंकि वो प्रहलाद को मार नहीं पा रहे। Because if Krishna wants you to survive, who will kill you? क्योंकि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कौन आपको मार सकता है। Right, so he had a great determination and faith that the Lord will protect me तो बहुत दृढ़ निश्चय और श्रद्धा थी कि भगवान मुझे in बचाएंगे, my devotion. मेरी भक्ति। You guys get some threatened and you get like some guilt complex, and the parents are doing some drama, rolling on the street, right? And immediately they kill your spiritual life. जैसे आपको तुरंत ही जैसे कोई धमकी दी जाती है, इसी तरह का आपको गलती आपके अंदर निकाली जाती है, या माता पिता जो है भावनात्मक होकर जमीन में लौटने का नाटक करने लगते हैं, तुरंत ही आपकी आत्मा की हत्या हो जाती है। So they threaten you. तो वो आपको धमकी देते Hey, हैं, why do you move those chairs over to the left? तो उन कुर्सियों को बाईं तरफ कर दीजिए। Move those chairs. Right, little more. There you go. You're crowding. Move over. Hey, Ashok, move over. All right. Give the gentleman some space. You know. I need to work on that guy. You know. मुझे थोड़ी जगह दीजिए, मुझे उनके ऊपर कुछ काम करना है। Now he's smiling. Okay, he's all right. He's gonna be all right. अब ये मुस्कुरा रहे हैं, अब ये ठीक है। Like you see, the family is putting some threat against you. They're putting guilt trip on you, right? There's so many different type of techniques they're using, and then you're giving up your bhakti, your determination, your boldness to practice spiritual life. परिवार वाले धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर दोस्त पे दोस्त लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के नाटक करते जा रहे हैं और आपके आध्यात्मिक जीवन को मारते जा रहे हैं, और आप इतने शक्तिशाली नहीं है उसको बचाने के लिए, So you let them kill you, और वो आप उनको मारने दे रहे हो। or they just say, "I'll take you out of the family inheritance. You'll get no money." या फिर वो कहते हैं हम अपनी पारिवारिक संपत्ति सबको बाहर कर देंगे, हमको Sometimes कोई they पैसे नहीं threaten देंगे। like that. हमें ऐसे भी धमकी दी जाती है। I'll take you right out. I will not look at your face. I don't even want to know you. हम आपको बाहर निकाल देंगे, हम आपका चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं, हम आपको जानना नहीं चाहते। Right? If you become devotee and you marry devotee, then I disown you. अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, भक्त से विवाह करना चाहते हैं, तो आप हमारे You're नहीं no रहे। longer my daughter. You're no longer my son. अब आप मेरी बेटी या बेटा नहीं रहे, And you have no money. You're cut off from all inheritance and money. और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई संपत्ति नहीं, सभी चीज से बाहर कर दिया जाएगा। Right? Some threatening going on there. कुछ धमकी चल रही है, Mataji doesn't have any money, so she's not worried about all of that. माता जी के पास कोई पैसा नहीं है, तो उनको कोई चिंता नहीं है सब चीजों की। But as soon as you start talking about the money, लेकिन जैसे ही आप मनी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, oh, so then we're like, oh, what to do? तो फिर हम Right? कहते हैं अब क्या करें, What to do? I need some money. क्या करें, मुझे पैसों की जरूरत है। Right? So they're either threatening you or they're buying you off, isn't या it? तो वो आपको धमकी दे रहे हैं या आपको खरीद रहे हैं। Right? They don't even have to try to kill your body. उनको आपको शरीर को मारने तक की जरूरत Right? नहीं They put some pressure on you, immediately you just melt, you know? है। थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव डाला जाता है और आप पिघल जाते हैं। Like no strength. You cannot go through that. इससे कोई शक्ति नहीं, इससे आप गुजर ही नहीं पाते हैं। And this is problem especially in India. और ये है भारत में समस्या। Right? Prabhupada calls it organized family attachment. बात कहते हैं व्यवस्थित पारिवारिक आसक्ति है। So this is a great stumbling block and obstacle. तो ये बहुत ही बड़ी बाधा है, रुकावट है। But it's also a test of how determined are we. लेकिन यह परीक्षा भी है कि हम कितने दृढ़ Right? निश्चय Even हैं। to the point of giving up your life, you rather die than not to be devoted. यहाँ तक कि मृत्यु तक आने की बात की, अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, मृत्यु तक भी जाने को They तैयार put a हैं। little guilt trip on us or take us out of the bank account immediately. We're like, I don't know if I want to be devoted. थोड़ा हम पे दोष डालना शुरू करते हैं और हमें कहते हैं हमें कोई बैंक बैलेंस I नहीं don't want मिलेगा। to upset them. हम कहते हैं वो मैं उनको I नाराज want नहीं to करना
चाहता हूँ। pacify all the demons in my family, you मेरे know. परिवार में जितने असुर हैं मैं उनको शांत करना चाहता हूँ। Right? But Prahlad was so simple. Anytime the father asked, he just directly talked about absolute truth. लेकिन प्रहलाद इतने सरल थे, जैसे उनके पिता उनसे बात करते थे तुरंत वो परम सत्य के बारे में बात करते Even he's preaching to him. He's like, "You're a demon. It's not good. You know, you should purify yourself." थे। यहाँ तक कि वो उनको ही प्रचार करते हैं, आप एक असुर हैं, आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए, आपको शुद्ध बनाना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना And चाहिए। then the father just throws him on the ground और पिता उनको जमीन पर पटक देते थे and ends up wanting to try to kill him. और अंत में उनको मारने तक के लिए तैयार थे। So this is great demon, तो ये बहुत बड़ा atheistic personality. असुर नास्तिक व्यक्ति है। So it's such a contrast of the greatest demon and the greatest devotee. तो ये बहुत बड़ा एक तुलनात्मक है चीज़ है कि बहुत महान As you were talking last night, like everybody has their nature, जैसे right? कल की रात आप बात करें सभी का अपना एक स्वभाव होता है। And it was a very interesting conversation because all day we were discussing this topic about the scorpions and should you kill them or not kill them, ये right? बहुत दिलचस्प विषय था, हम पूरे दिन इसके बारे में बात कर रहे थे, हमें उनको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, What would the real sadhu do? असली साधु क्या करेगा। Right? So when I was reading about this enviousness and the Hari-katha, and so then all of this topic came up. तो जब मैं हिरण्यकशिपु और द्वेष के बारे में बात कर रहा था तो ये सारे विषय बाहर So आए it's very interesting story also of Srila Prabhupada and also discussing this point about what do you do with envious personality. और श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे थे इसके ऊपर कि आप ईर्ष्यावान लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। So can we read that? तो क्या हम पढ़ सकते हैं Can we उसे? get a little, we'll go into that discussion a little bit. हम उस चर्चा में थोड़ा जाना चाहेंगे। Om Jnana Tamarandasya Gananjana Salakaya Chaturmritandana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Shri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srila Prabhupada was speaking on the Srimad Bhagavatam 7th canto. तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद पे प्रवचन दे रहे हैं, Chapter 9, अध्याय 9 and this was August 29, और 29 अगस्त 1968, Montreal. 1968 मॉन्ट्रियल में। And Srila Prabhupada is speaking in the 7th canto और श्रील about प्रभुपाद this pastime. 7वें स्कंद में इस लीला के बारे में बता रहे हैं। And in that Srimad Bhagavatam verse 7, 9, 13, और श्रीमद् भागवतम के 7, 9 और 13वें नंबर श्लोक में and Prahlad Maharaj is offering his prayers. और प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण कर रहे हैं। And he's saying that, "Oh my Lord, all of the demigods headed by Lord Brahma और बता रहे हैं, हे भगवान, जितने सारे देवता जो ब्रह्मा के नेतृत्व में आए हैं, they are all sincere servants of your Lordship, वो आपके एक इष्ट सेवक हैं who are situated in transcendental position. जो दिव्य पद पे स्थित हैं, Therefore they are not like us." इसीलिए वो हमारी तरह नहीं है। Prahlad and his father, the demon Hiranyakashipu. प्रहलाद और उनके पिता असुर हिरण्यकशिपु, So he's associating that because his father's a demon, he's coming from the family of the demons. तो वो अपने आप को देख रहे हैं क्योंकि वो असुर के परिवार से हैं, तो अपने आप को भी असुर की तरह मान So रहे we are not like those demigods हैं। तो कह रहे हैं हम उन देवताओं के जैसे नहीं who are in a transcendental position. जो दिव्य पद पे स्थित हैं। Then Prahlad said, your appearance in this very fearsome form is your pastime that you're doing for your own pleasure. तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जो आप इतने भयावह रूप में प्रकट हुए हैं, ये आप लीला खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं And for the pleasure of your devotees. और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। Krishna says, I come to give pleasure to my devotees. कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों को खुश करने के लिए आता हूँ। And if the devotees are happy, then the Lord is happy. और अगर भक्त खुश है तो भगवान खुश है। And he's also killing the demons और वो असुरों को भी मारते हैं and always re-establishing religious principles. और सदैव धर्म के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। Prahlad says that such an incarnation is always meant for the protection and improvement
of everyone in the universe. और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं ऐसे अवतार सभी की रक्षा के लिए और पूरे ब्रह्मांड में सभी की उन्नति के लिए जरूरी है। It's very nice prayers from a 5-year-old child. ये बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं 5 साल के बच्चे। Most 5-year-old children could not pray like this. ज़्यादातर 5 साल के बच्चे इस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते। But because he was Premi Bhakta, pure devotee, he had a very nice spiritual intelligence. क्योंकि वो प्रेमी भक्त शुद्ध भक्त थे, उनके पास बहुत ही अच्छी शुद्ध बुद्धि थी। Just like Dhruva Maharaj, he जैसे was ध्रुव 5-year-old महाराज boy. वो 5 साल के बच्चे थे। So he wanted to pray to the Lord, but he said, I'm a 5-year-old boy, what am I going to pray? लेकिन वो 5 साल के बच्चे थे, भगवान को कुछ प्रार्थनाएं करना चाहते थे, लेकिन कहते मैं क्या प्रार्थना कर पाऊंगा। And then it said that the Lord in the heart, he knows, oh, my devotee wants to pray, but he doesn't know what to say. और फिर वो भगवान समझ पा रहे थे मेरा भक्त मुझे प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन इन्हें पता नहीं क्या कहना है। He wants to offer some nice prayers to me, but he doesn't really know how to say it. ये मुझे कुछ अच्छी प्रार्थनाएं अर्पण करना चाहता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे कहेगा। And the Lord put the conch shell on his head. और भगवान ने उनके मस्तक पे अपना शंख And रखा immediately he could understand everything about the creation. और तुरंत ही वो सृष्टि के बारे में वो सारा ज्ञान दिया And started offering all of these very, very sophisticated prayers. और बहुत ही जटिल प्रार्थनाएं वो अर्पण करने लगे। You need conch shell आपको शंख चाहिए or a thunderbolt? या कड़कड़ाती बिजली चाहिए, बिजली या शंख। So here, 5-year-old boy, Prahlad is offering such nice prayers to the Lord. 5 साल के बच्चे प्रहलाद भगवान को बहुत अच्छी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। And Srila Prabhupada says, so Prahlad Maharaj, he's requesting Lord Nrsimha तो प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से निवेदन कर रहे हैं that now you can become peaceful. कि अब आप शांत हो जाएंगे। Because before he's in Ugra Nrsimha mood, और पहले वो उग्र नृसिंह के भाव में थे, so nobody could calm him down. तो कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा था। And everyone was offering their prayers, but he was still like in that Ugra Nrsimha mood after killing everybody. सभी लोग अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, लेकिन कोई उनको उग्र नृसिंह के भाव को शांत नहीं कर पा रहा So था। all demigods like pushing Prahlad, like, can you please try to calm him down? You तो know? सारे देवता प्रहलाद महाराज को आगे धक्का दे रहे थे ताकि आप उनको शांत कर सकते हैं। They must have been also still scared, you know, हो सकता है वो भी पूरे भय में होंगे, because they're not exactly like completely pure either, you know what I वो mean? भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे। So they, you know, sometimes the Lord even with Indra, right, he'll just punish them, right? So they might also be a little insecure. तो कभी-कभी जैसे भगवान ने इंद्र को भी दंड दिया था, तो उनको भी थोड़ा सा असुरक्षित महसूस हो रहा होगा। While the blood is still dripping, you know, they might be a little nervous, you know. जब तक खून अभी भी टपक रहा था, तो उनको अभी भी थोड़ा सा वो सहमे हुए थे। And they're offering nice prayers, and the Lord like just not changing his mood, you know. और वो अच्छी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, लेकिन भगवान The अपने भाव को बदल demigods, रहे are, you know, offering their best of prayers, Lord Brahma offering their best of prayers, and still the Lord is like not pacified. तो देवता ब्रह्मा जी अपने सारे सबसे श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, लेकिन तब कोई भी उनको स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। So they said, okay, let's put this 5-year-old boy, you know, Prahlad there, तो उन्हें सोचा चलिए हम 5 साल के बच्चे प्रहलाद को वहाँ लेकर जाते हैं, because he has love for the Lord, maybe he can pacify the Lord. क्योंकि उनके पास भगवान के प्रति प्रेम है, तो वो हो सकता है भगवान को शांत And कर पाए। Prahlad saying, okay, now you can become peaceful. और प्रहलाद ने कहा अब आप शांत हो जाइए, Because this disturbing element, my father, is now finished. क्योंकि ये परेशान करने वाला व्यक्ति मेरे पिता अब खत्म हो चुके हैं। So he was disturbing element to everybody. तो वो सभी लोगों को परेशान कर रहे थे। So now be peaceful because now you've killed my father. तो अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि आपने मेरे पिता को मार दिया, Now he is finished. अब वो खत्म हो चुके हैं। So Prabhupada said, so there are 2 missions when Krishna appears, तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा के आने का आविर्भाव होने का 2 कारण होता है, giving pleasure to his devotees, protecting his devotees, भक्तों को आनंद देना, भक्तों की रक्षा करना and killing the demons. और शुरों का नाश करना। So this material world, Prabhupada continues, is a field of activity for the persons who have forgotten Krishna. तो प्रभुपाद बताते हैं ये भौतिक जगत उन लोगों के कार्य करने का स्थान है जो लोग भगवान को भूल चुके हैं। We don't want to get into that big discussion again. We discussed that in depth last night. तो उस बड़ी चर्चा में हम दोबारा नहीं घुसना चाहते, बहुत गहराई से हमने पिछली बार उसके ऊपर चर्चा की है। In the Vedic knowledge, there are regulative principles. और वैदिक ज्ञान हमें नीति नियमों का पालन करना If we सिखाता है। agree to act according to the Vedic knowledge in the real Vedic culture, और अगर हम असल में वैदिक संस्कृति को पालन करने के लिए तैयार हैं, then the Lord will be pleased with us. Then we can actually enjoy. तब भगवान हमसे खुश होंगे, तब हम असल में आनंद में रह सकते हैं।
Because in the material world there is nothing enjoyable for the spirit soul. तो भौतिक जगत में आत्मा के लिए कुछ भी आनंददायक चीज नहीं है। Just like the fish is an animal of the water. जैसे मछली जो है वो जल के रहने वाले प्राणी है। Is this better? क्या ये ज़्यादा बेहतर है? Because now they see. Oh, well now. So if the fish is not in the water, it cannot be happy. तो मछली अगर जल के अंदर ना हो तो वो खुश नहीं हो सकता। So the soul is meant to be in the spiritual environment. तो आत्मा इस आध्यात्मिक परिवेश में रहने के लिए बना है। That's why in material environment the soul cannot really be peaceful and happy. तो इस भौतिक परिवेश में आत्मा शांत और संतुष्ट नहीं रह So सकता। like a fish out of the water. जैसे मछली जब पानी के जल के बाहर आ जाती है। So Prabhupada is saying that, so if somehow that fish thinks, today I shall become an elephant, तो अगर मछली ऐसा सोचे कि आज मैं एक हाथी बनूंगा and that way I can enjoy the land, और इस तरीके से मैं जमीन का आनंद ले पाऊंगा, that is not possible. तो ये संभव नहीं है Because he has his nature, क्योंकि right? उसका एक स्वभाव है। So we are meant to swim in the spiritual atmosphere. तो हम आध्यात्मिक परिवेश में तैरने के लिए बने हैं। Then Prahlad continues his prayer. प्रहलाद अपनी प्रार्थनाएं आगे जारी रखते 7, हैं। 9, 14. 7, 9, 14। My dear Lord Nrsimhadev, हे प्रिय नृसिंहदेव, please therefore cease being angry. इसीलिए अपना क्रोध आप रोकिए। Now that my father, this great demon Hiranyakashipu, has been killed, और ये महान असुर मेरे पिता हिरण्यकश्यप मारे जा चुके हैं। since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, यहाँ तक कि साधु भी एक जहरीले सांप और बिच्छू के हत्या पे प्रसन्न होते हैं। so Prahlad is saying even saintly persons take pleasure in killing scorpion or a snake. तो साधु जैसे व्यक्ति भी सांप और बिच्छू जैसे जीवों का हत्या करने में उनको भी आनंद So प्रसन्न you होते हैं। and all the people of the world, everyone has achieved a great peace and satisfaction because of the death of this demon. तो आपने और संपूर्ण विश्व के लोगों ने बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त की है इस महान असुर के वध के बाद। And because now he's gone, now everyone is very confident that they can be happy. तो अब वो जा चुके हैं तो सभी लोग बहुत आत्मविश्वास में रह सकते हैं कि सभी खुश हो सकते हैं। So we have this envious, demoniac, atheistic people. We're not really happy तो अगर ऐसे ईर्ष्यावान, द्वेषवान व्यक्ति अगर हमारे आसपास हो तो हम खुश नहीं हो सकते। because it has to be birds of the same feather flocking together. क्योंकि एक पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ सकते हैं। So Prahlad, when he was with his friends and preaching Krishna consciousness, he was very happy. तो प्रहलाद अपने दोस्तों के बीच में कृष्ण भागवत प्रचार कर रहे थे तो बहुत खुश थे। So not really fitting in with this demoniac family. लेकिन इस आसुरिक परिवार में वो सही नहीं बैठ रहे थे। So he's saying everyone should take pleasure because now this demon, my father, has been killed. तो कहते हैं हम सभी को अब आनंद में रहना चाहिए क्योंकि ये असुर मेरे पिता मारे जा चुके हैं। And everyone now can be confident that they can be relaxed and be peaceful and happy. और सभी आत्मविश्वास रख सकते हैं कि वो शांत रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। And they will always remember your auspicious incarnation, how you appeared like this in order to free us all from fear and anxiety. और सभी ये याद रखें कैसे अपने शुभ आविर्भाव किया हम सभी को भय और चिंताओं से मुक्त करने के लिए। So Prabhupada said, so there may be a question that when Prahlad was very glad that his father was killed, how can he be very glad that his own father is killed? प्रभुपाद यहाँ एक सवाल उठा रहे हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज के पिता का वध हुआ लेकिन वो खुश हो रहे हैं अपने पिता के वध पे। Who can say, I'm very happy my father got killed? कौन ऐसा कर सकता कि मुझे बहुत खुशी है मेरे पिता मारे जा चुके हैं। And Prabhupada said, this question may be raised, well, what kind of a person or devotee is he that he's saying like this? और प्रभुपाद बता रहे हैं ये सवाल उठाया जा सकता है ये कैसे भक्त हैं जो इस तरह की बात करते हैं। Okay. ठीक है। He makes a better door than a window. तो ये ज़्यादा अच्छा दरवाजा बनाते हैं खिड़की बनाने के You लिए। got your shot? आपको मिल गया अपना शॉट? More or less? कम या ज़्यादा? You need more light? आपको और ज़्यादा लाइट चाहिए? Sanatan, relax, sit down, sit down. बैठिए आप Be सब peaceful. शांति से बैठिए। All right?
ठीक है, Do you want to see what that looks like? आप देखना चाहते हैं कैसा Check it दिखेगा? out. जाइए जाकर देखिए। He wants to get the best shot. He's trying to do his service. वो अपना सेवा करने का प्रयास करें, सबसे श्रेष्ठ शॉट लेना चाहते हैं। He's making me look better, you know, then I can feel really proud and really arrogant, you know. तो मुझे वो अच्छा दिखाने का प्रयास करें ताकि मेरे अंदर वो अहंकार आकर Gotta आ get the सके। perfect shot, you know. एकदम परफेक्ट शॉट लिया जाएगा। Then my false ego will be nicely pacified. तब मेरा मिथ्या अहंकार बहुत अच्छे से शांत होगा। So what kind of person devotee is saying, I'm glad everybody is happy my father was killed? तो ये किस तरह का भक्त है जो खुशी से कह रहा है कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं? And he's such a great devotee of the Lord. और भगवान के इतने महान भक्त हैं। And then he's also witnessing his own father being killed. और साथ ही वो उसको देख भी रहे हैं कि पिताजी को मारे जाते हुए। And then he's requesting the Lord, my dear Lord, now this disturbing element is already finished. और वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अब जब ये सबको परेशान करने वाला व्यक्ति खत्म हो चुका है। Can you say like that about your father? This disturbing element is now finished. You know? तो अपने पिता के बारे में ऐसा कह सकते हैं ये परेशान करने वाला व्यक्ति अब खत्म हो चुका है। That means he was very glad and happy that his father got killed. इसका मतलब वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे कि उनके पिता मारे जा चुके हैं। So from social conventional point of view, what type of person can be like this? तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये कैसा व्यक्ति हो सकता है That the son is glad that the death of his father. कि बेटे को अपने पिता की मृत्यु पे खुशी हो रही है? So do you think this is very nice? क्या आपको लगता है ये बहुत अच्छा है? So these points, it has to be considered. तो इन बातों को विचार करने की जरूरत है। But Prahlad Maharaj, he gives a very nice evidence. लेकिन प्रहलाद महाराज एक बहुत ही अच्छा प्रमाण देते हैं। And this is a very interesting point of Krishna conscious person. और ये कृष्ण भावनामय व्यक्ति की बहुत ही दिलचस्प बात है। That whatever they will say, they will give full support. जो भी वो बोलते हैं उसके पीछे वो पूरा अपना सारा समर्थन देते हैं। So they'll not just say something and then it's not backed up with the Guru Sadhu Shastra. ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कह देंगे और उसको गुरु साधु शास्त्र के आधार पे स्थापित नहीं करेंगे। It has to scientifically make sense. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका बिल्कुल सही अर्थ होना चाहिए। So Prahlad is giving very nice support here. तो प्रहलाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा समर्थन दे रहे हैं। And he's saying, my father, he was an asura, he was a demon. और प्रहलाद बता रहे हैं मेरे पिता एक असुर थे। So because your mission was to kill, so therefore you came to kill him. और आपका उद्देश्य होता है असुरों का नाश करना, इसलिए आप आए उनको मारने के लिए। And that by this killing process, और इस हत्या वध करने की प्रक्रिया से not only myself, केवल मैं ही नहीं, but the sadhus, all of the sadhus, they are also all pleased. लेकिन सारे साधु इससे खुश रहे। So this is bringing a very interesting continuation of our discussion, right? और हमारी चर्चा को ये बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जारी रख रहा है। So Prabhupada says, so do you think that the sadhu, those who are sadhu, that they are pleased when a person or living entity is killed? और प्रभु बता रहे हैं क्या साधु खुश होते हैं जब ऐसे किसी जीवात्मा की हत्या होती है? Not ordinary person. तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं। This, what's it called? Vrishkita? Is that the scorpion name? Huh? Yeah. Yes? Is that, am I saying right? Vrishchika? Vrishchika? Yes. So that means a scorpion. वृश्चिक मतलब का As soon as I ever hear scorpion in my whole life, I'm going to remember our discussion. जब भी मुझे बिच्छू की याद आएगी हमें अपनी इस बातचीत की Just like the Lord coming in this form of Lord Nrsimhadev, I'll also always think of this pastime as well. जैसे भगवान नृसिंहदेव के रूप में आते हैं मुझे भी हमेशा ये लीला इसी से याद रहेगी। So the scorpion and sarpa, और जो sarpa means a snake. दो सांप और बिच्छू, So naturally, wherever a scorpion is found or a snake is moving around, तो जहाँ पे भी कोई बिच्छू या फिर कोई सांप घूमता हुआ पाया जाता है, every person, every man around it will be prepared. How do I kill it? तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं कैसे हम इसको मारेंगे। Oh, here's a snake. Let's kill it. तो यहाँ एक सांप है इसको मार देते हैं, Here's a scorpion. Let's kill it. यहाँ एक बिच्छू है इसको मार देते हैं। So Prabhupada telling a story that one time he was in a lullaby, he was taking rest.
तो प्रभुपाद एक बार उदाहरण देते थे, वो इलाहाबाद में एक बार विश्राम कर रहे थे and somehow or other some snake went in there, it went over in his blanket into his bed. और किस तरह से एक सांप आते हुए उनके चादर के अंदर घुस के उनके बिस्तर पे आ Prabhupada गया। said, in my bed there was a snake. बात बता रहे थे, मेरे बिस्तर पे एक सांप आ गया। And Prabhupada said, I don't know how it came there, मुझे नहीं पता कि वो सांप वहाँ कैसे पहुँचा, but I informed the servants लेकिन मैंने अपने that there's a snake भक्तों has को बताया entered into my bed. कि ये सांप मेरे बिस्तर पे घुस चुका है। And they all immediately came with the sticks. और सभी लोग डंडे के साथ आए। So when the bed sheet was taken away, तो जब चादर हटाई गई you know, बिस्तर the से, quilt, the blanket, it was taken away. तो जब कंबल बिस्तर से हटाया गया, So then everybody, we could see that snake was there. तो सभी देख पाए कि वो सांप वहाँ था। And Prabhupada said, I could see the face of that snake. तो बता था मैं उस सांप का चेहरा देख पा रहा था। And he was so afraid. और वो इतना भयभीत Prabhupada था। said that the face of the snake is he was very afraid that everyone was going to kill him. बस बता थे उस सांप का चेहरा इतना भयभीत था कि सभी लोग उसको मारने वाले हैं। Because he was so afraid. और क्योंकि वो इतना भयभीत था, He could understand, now I am going to be killed by so many of these people with the stick. वो समझ पाया इतने सारे लोग मुझे मिल के मारने वाले हैं डंडे से, And they have come. और वो आ चुके हैं। So Prabhupada, so I told them, don't kill this poor fellow. तो मैंने उनको कहा ठीक है, इस गरीब को मत मारो, Better take it, just send it back into the forest. बेहतर होगा इसको वापस जंगल में छोड़ दो। So then I was like, oh, he was right. तब मैं सोचा कि हाँ ये तो सही बात कह रहे थे, Don't kill it, just take it, put it into the forest. इसको मारो मत, जाकर जंगल में छोड़ दो। And then Prabhupada said, but they took it away. और फिर प्रभु बता रहे हैं उनको वहाँ But मार later दिया। I understood anyway they killed it. और बाद में मुझे पता चला कि किसी उन्होंने हमको मार दिया। So Prabhupada was not so happy about that. प्रभुपाद उससे ज्यादा खुश नहीं हुए। He said, oh, just look at this poor fellow, he's afraid, just put it back in the forest, don't kill it. ये पूरा भयभीत है, इसे मारते नहीं, इसे जंगल में छोड़ दिया जाए। So once I saw in Mayapur, Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, तो एक बार मैंने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में so this black snake, it was moving there. एक काला सांप वहाँ घूम रहा था। And my Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati और Thakur, मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, he was on upstairs and everyone asked the permission whether they should kill that snake, that black snake. और वो ऊपर थे कमरे में और सभी लोग उनसे आदेश मांगने के लिए क्या उस सांप को मारा जा सकता है। And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, yes, immediately it should be killed. और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा हाँ तुरंत ही उसे मार देना चाहिए। So at that time, I was thinking how Guru Maharaj is ordering the killing of that snake. तो मैं ये सोच रहा था उस समय कि कैसे गुरु महाराज ने उस सांप को मारने का आदेश दे दिया। Because Prabhupada already had his own experience that he just showed mercy to that snake, tried to, right? और प्रभुपाद ने अपने अनुभव में उस सांप को कृपा देने का प्रयास किया अपना बचाने के लिए। So now he's meeting his guru and the guru is saying, yes, immediately kill that snake. और जब वो अपने गुरु से मिले, गुरु ने कहा तुरंत ही इस सांप को मार दो। So Prabhupada said, so then after so many years, when I began to more seriously read Bhagavatam, then I came to this passage by Prahlad Maharaj. तो श्रील प्रभुपाद बताया फिर आगे जब मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो बाद में जब ये मैं इस वृत्तांत पे पहुंचा ना प्रहलाद महाराज के निर्देश है That those where Prahlad Maharaj is saying very saintly devotees of the Lord, all the people, they're very happy and pleased when a scorpion or poisonous snake is killed. प्रहलाद महाराज बता रहे हैं साधु और ऋषि जैसे लोग को बहुत खुशी होती है जब किसी जहरीले सांप को मारा जाता है। Then I thought, oh, my Guru Maharaj, he did the right thing. और तब मैं सोचा मेरे गुरु महाराज ने सही काम किया था। So when he read the Shastra, when he read Bhagavatam, then he understood what is the right thing, and Prahlad Maharaj telling what is right thing. तो जब हमने शास्त्र पढ़ा भागवतम पढ़ा तब उनको सही चीज पता चली कि प्रहलाद महाराज सही बात कह रहे हैं। So even a sadhu, तो यहाँ तक कि एक साधु भी, then why is he pleased when a scorpion or a snake is killed? तो साधु को क्यों खुशी होती है जब किसी सांप या बिच्छू को मारा जाता है? This brings the next question. ये अगला सवाल लेकर आता है। Why would he be pleased if they're killed? क्यों उनको खुशी होती है जब ऐसे चीजों को मारा जाता है? And the reason is that these two kinds of creatures, they bite innocent persons who have no fault.
और ये इसका कारण दिया जाता है क्योंकि ये दो जीव ऐसे लोगों को काटते हैं जिनकी कोई गलती नहीं So है। they didn't really do anything wrong, still they're biting them. तो वो लोगों ने कोई गलती भी नहीं की हो, फिर भी वो जाकर उनको काटते Or हैं। even if they have some little fault and they're not conscious of that, still they'll get bitten. और यहाँ तक कि हो सकता है किसी ने कोई गलती कर भी दी हो लेकिन उसको पता नहीं था उस गलती के बारे में, फिर भी वो उनको काट देते By हैं। this venomous snake. और ये जहरीले सांप के माध्यम से, Because by their nature they are so angry and they are so envious क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, इनको इतना गुस्सा और इतना ज़्यादा इनके अंदर द्वेष है that they feel pleasure if somebody is bitten and suffers and is immediately dies. That gives them pleasure. उनको बहुत आनंद मिलता है किसी को काटने में, उनको दुख देने में और उनको मारने में, Because that is their nature. क्योंकि यही उनका स्वभाव है। Therefore, killing a snake and a scorpion means to save it from committing so many further sinful activities. तो इसीलिए ऐसे सांप और बिच्छू को मारना असल में उनको बचाना है ताकि वो और ज़्यादा पाप न करें। So if you're envious and angry and giving pain to other people, this is a sinful activity. अगर आप द्वेषी हैं और दूसरे लोगों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, यानी कि आप पापी व्यक्ति। So if you kill it, then you're stopping them from continuing on committing so many sinful activities. तो अगर आप उनको मार देते हैं तो उनको आप रोक रहे हैं और ज़्यादा पाप कर्म नहीं करने के लिए, Because by its nature, it will kill so many persons, so many animals. क्योंकि अपने स्वभाव से बहुत सारे लोगों को और जानवरों को मारेगा, Because that is its nature. क्योंकि यही उसका स्वभाव है। Some innocent person, they'll just bite some innocent person and try to kill it. किसी भी नादान व्यक्ति को वो मारेंगे और उसको काटेंगे और उसको मार डालने का प्रयास। So there is sin by killing another person. That is sinful. That will just continue. तो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना ये पाप कर्म है, तो उनका पाप कर्म करना जारी रहेगा। So better to kill it to stop its sinful activities. बेहतर उसको मार दिया जाए ताकि उसका पाप बंद हो सके। And that is the reason here that Prahlad is saying. और यही कारण प्रहलाद महाराज यहाँ पे भी दे रहे हैं। How the sadhus are becoming happy or pleased by the killing of scorpion or snake. कैसे साधु खुश होते हैं सांप और बिच्छुओं की हत्या करने में। So those who are asuras, those who are atheistic, they don't believe in God. जो असुर नास्तिक लोग हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते। They are just like this Chika and Sarpa, scorpion and snake. वो ये सांप और बिच्छू की तरह होते हैं। Without any reason, they just occupy somebody's country बिना किसी कारण के वो किसी के देश पे जाके अपना शासन करते हैं, or somebody's place, या किसी की जगह पे घुस जाते हैं, divide and conquer, फूट डालो राज करो, and then they just kill people. और फिर जाके लोगों को मारते हैं। This is demons, this is atheistic people. ये है असुर नास्तिक लोग, And this is going on. और ये चल रहा है। So in the Manu Samhita it stated that when a king hangs some murderer, you're doing a favor to that murderer. तो बताया जाता है मनु संहिता के आधार पे जब किसी हत्यारे को फांसी पे लटकाया जाता है तो असल में उस हत्यारे के साथ बहुत बड़ी इंसाफ किया जा रहा है। You're not a murderer, are you? आप कोई हत्यारे नहीं है, Yeah? है आप? Did you murder anybody? क्या आपने किसी की हत्या की है? Did you kill anybody? किसी को मारा है आपने? You did? आपने मारा है? He's saying yeah. कह रहे हैं हाँ आपने मारा है। That's why he's thinking if he hang himself, then he get free from his sinful activity. इसलिए लोग सोचते हैं अपने आप को अगर लटका लेंगे तो अपने पाप से बच के निकल जाएंगे। Manu Samhita said that. मनु संहिता ने ऐसा कहा था। Manu Samhita stated when a king hangs some murderer, it's a great favor to him. मनु संहिता बताता है अगर कोई राजा किसी हत्यारे को फांसी पे लगाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार करता है। In every country, in every civilization, हर एक देश में, हर एक सभ्यता में the punishment is life for life. तो दंड जीवन के लिए जीवन लिया जाता है। So if you have killed somebody, then you shall also be killed. अगर आपने किसी की हत्या की है तो आपको भी मारा जाना चाहिए। And then it is supported in Manu Samhita. और मनु संहिता में इसको समर्थन भी दिया So when गया। that king orders the murderer should be killed, that you're doing a favor for him. जब राजा आदेश देते हैं कि हत्यारे को फांसी पे चढ़ाया जाए तो उसके ऊपर एक उपकार किया जा रहा है। Because if he is not killed, then that sinful activities, that reaction will continue. कि अगर उसको मारा नहीं जाएगा तो उसके पाप कर्म की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। And then the next birth,
then he'll have to suffer. और अगले जन्म में उसे दुख भोगना पड़ेगा। Of course, if they surrender to Krishna, और निश्चित है, अगर वो कृष्ण को शरणागत then करते हैं, Krishna says, I'll destroy your sinful reaction. और कृष्ण कहते हैं मैं आपके पाप कर्म की प्रतिक्रिया नष्ट कर दूंगा। But without surrendering to Krishna, nobody can free us from this karmic reaction. लेकिन कृष्ण को शरणागत किए बिना कोई भी हमें इस कार्मिक प्रतिक्रिया से छुटकारा नहीं दिला सकता। Then in the next life, we will be forced to suffer. और अगले जन्म में हमें मजबूर होकर दुख भोगना पड़ेगा। But if he's killed in this life, लेकिन अगर इस जन्म में उनको मार दिया जाए, then all of his sinful activities are finished by killing him in this life. तो उनके सारे पाप कर्म इस जीवन में उनको मार देने से खत्म हो जाएंगे। So we have no more to suffer that reaction in the next life. ताकि अगले जन्म में उनको दोबारा ये दुख ये इसका प्रतिक्रिया न झेलना पड़े। So you're actually doing a friendly action. You're actually helping that तो person. असल में उस व्यक्ति के साथ उसकी मदद की जा रही है। So similarly, a scorpion or snake, if it is killed, that means you're saving it from having to suffer further. तो इस तरह अगर किसी सांप या बिच्छू को मारा जाता है तो उसको मदद की जा रही है ताकि उसे और ज़्यादा दुख न हो। Because all the living entities, they bit and stung or whatever it's called, then those who died, they have to take a sinful reaction for that. तो जिन भी लोगों को उन्होंने डंक मारा या काटा और वो मर गए तो उनको सभी का प्रतिक्रिया लेना पड़ेगा पाप का। So if you kill them here, then they don't have to take that reaction in the next birth. अगर उनको अभी मार दिया जाएगा तो उनको ये इस सारा प्रतिक्रिया अगले जन्म में नहीं मिलेगा। Therefore, Prahlad Maharaj is saying that the sadhus become pleased and they understand this is best course of action. इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं साधु को बहुत खुशी होती है और उनको पता है ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है उनके लिए। Because this type of demoniac and envious attitude towards innocent people, they're also protected. क्योंकि इस तरह के आसुरिक लोगों को मार के बाकी